ऑडिबल शुभुची मो भॉइस तो एग्जांपल्सटा निजे करिवो देखिकी माने आगो निजे करिवो तो सॉल्व करिवो देखिबोनी सॉल्यूशन साइ साइ देखिबोनी हैला एससी वर्मर एग्जांपलटा निजे करिवो आगो पॉइंट चार्ज जहा अछि करिवो मो गुटे 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 करके सब डिस्कस करबी एक नंबर मु करेबिनी कर परिबो एक नंबर कर परिबो देखि कलो बाहर कलो जल्दी इप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशनल फार्मूला जल्दी बाहर करो इप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशनल फार्मूला हाथ टिके चलो क्विक 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 हाथ तो स्लो कम भाई सही समर आंसर आसिला सिंपल फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एपटे चार्ज रो स्क्वायर डिस्टेंस रो स्क्वायर तो एप्सिलॉन नॉट एपटे पळे आसिले चार्ज रो स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सॉरी फोर्स फोर्स आर स्क्वायर चार्ज टा केमथि लिखिबा करंट इनटू टाइम एम्पियर टाइम हला करंट हमर फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज टा नुहे m फोर्स हला l t-2 लेंथ रो स्क्वायर m -1 l -3 t to the power 4 a2 c2 लिखा जाएनी कूलम लिखा जाएनी हला चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी जो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज थिला कि हाँ जदि क्यू रो टर्म रे कहिथिबो तमे लिखिबो अलगा कथा न कहिछु माने एटा लिखिबो हला तापर देखिबा 2 3 4 are the similar problems 2 3 4 are the similar problems I think एदर किसी प्रॉब्लम नहीं दीटा चार्ज देइछि ताका भितर फोर्सेस लिखि परिबो सबु सिमिलर प्रॉब्लम दीटा चार्ज
तांको भीतर किसी डिस्टेंस अछि तो फोर्स बाहर करिवो के रो वैल्यू जानिछो k q1 q2 by r square हला how many times of weight your weight तुम नबो तुमर weight केते 50 kg 40 kg जहाँ भी तुमर थियो हला तब at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals weight of the 50 kg person एका कथा चार दिटांग समान कर दिया डिस्टेंस बाहर करियार अछि दैट फोर्स इज इक्वल टू 50 kg फोर भी सेम टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन दे चार्ज बाहर करियार अछि तो नंबर 5 आल्सो इजी फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फॉर्मी द प्रोटॉन्स 1 फॉर्मी चार्ज दे दीची प्रोटॉन नो चार्ज हला 1.6 × 10⁻19 कूलम तांको भीतर डिस्टेंस देछि 1 फॉर्मी 10⁻15 मीटर ताल तांको भीतर फोर्स देखियो हाँ नंबर 6 हेची करिछो को जाय करिछो 10 जाय हेची नंबर 6 20 तक सॉल्व हो गला वेरी गुड तल 20 पर डू करबा देखी दिए 20 जाए कौन भलो क्वेश्चन अच्छी NaCl molecule is bound due to the electric force ठीक अच्छे find the ratio of electrical ए नंबर 14 नो टिके आंसर टा मन रखि दउथो बळे बळे डायरेक्ट पड़ी जाउछ जहाँ भी तुम आंसर बाहरला नंबर 14 आंसर इलेक्ट्रॉन भितरे सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भितरे फोर्स प्रोटॉन भितरे फोर्स हैला ई रेशियो टी मन रखुथो इलेक्ट्रॉन भितरे से 10 टू 36 10 टू 40 10 टू 39 ए टाइप रो सब आंसर आसियो डायरेक्ट पडुची हैला मन रखले जल्दी हालाकि बेस समय लागबोनी मन रखले भलो हे गला वेरी गुड ए फोर्स इक्वल टू सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन दे दीची तो डायमेंशन फार्मूला छड़ा हो गला तब सेकंड हेदरे अछि that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive force nuclear force तो तांको भितरे k q1 q2 r square is equal to this force कर दबो हले logarithm के यूज करे पड़ी पारे तब 3 equal charges each are held fixed at the three corners of an equilateral triangle एवला करा है 4 equal charges fixed the charge due to the rest 3 करा है hydrogen atom find the speed of the electron in ground state of the hydrogen 20 टा ही नंबर 20 ओके समझता चलो number 21 two charge particles having charge this much each are joined by insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦିଟା ରଖା ହେଇଛି ହେଲା ତ ଏଟା ଟେବଲ चार्ज दीटी अछि तो दीटांग चार्ज को गोटे पॉइंट रो झुलेकी रखा है फ्रिक्शन नहीं
दुटा जो सेम चार्ज सन रिपल्सन हम तो मैक्सिमम एभला स्टेज रे हो जाई तो एटा जदी एल देछि एटा भी एल हम हैला तांको भितरे टेंशन तो एठी याको ऊपर जा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होबो सेटा सेतरे टेंशन क्रिएट हो एठी याडे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एठी याडे एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भितरे टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम जानि छ के क्यू स्क्वायर लेंथ डाटा 2l लिखा पड़िबो 2l रो स्क्वायर दैट इज योर टेंशन हैला तो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन करई छी सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन आगु भी करई छी कोन दुईटा बॉडी जदि ग्रेविटी फ्री स्पेस रे झुले दबा दुईटा इक्वल चार्ज को गोटे पॉइंट रू सस्पेंड करबा जदि ग्रेविटी फ्री स्पेस रे दुईटा चार्ज को सस्पेंड करबा ताको भितर सकता हबो तो वेरी सिंपल तो ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दउची जी जदि 0 हो गला ए दुईटांग बॉडी में सेपरेट पूरा ए भले ए बॉडी एठी आसी कि थिबो चल तांग भीतर जे डिस्टेंस एल एल हेती ऊपर समान क्वेश्चन हिजबो एटा एल एल तो 12 डिस्टेंस सिमिलर टाइप क्वेश्चन 22 number two identical balls each having a charge this much coulomb and mass 100 gram are suspended from a common point by two insulating string this the two balls are held at a number 22 is a good question board रे बेस परियो तमरो भलो देखो दुईटा आइडेंटिकल बॉल अछि each having charges 22 two identical balls each having a charge of this much coulomb etik mass are suspended from a common point by two insulating strings each of the balls are held at separation 5 cm say याको सेपरेशन कर दैछि 5 cm रिलीज करा कॉमन पॉइंट टू दिटा सस्पेंड करा हिच तांगर चार्ज दिया हिच क्वेश्चन रे दिटांगर मास भी दिया हिच चार्ज इज 2 into 10 to minus 7 coulomb mass is 100 gram okay under two insulating strings each of length 50 centimeter find the find electric force on one of the charge तो भीतर इलेक्ट्रिक फोर्स फास्ट बाहर कर परिबो इजीटा या पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याडे पड़थो या पर याडे पड़थो केमते करबो ए डिस्टेंस लिखे पे जानि छ 5 cm चार्ज जानि छ तो सिंपल तो क्वेश्चन फर्स्ट बिट इज वेरी सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इनिशियली k q स्क्वायर बाय तांको भीतर डिस्टेंस रो स्क्वायर क्लियर second the component of the resultant force on it along and perpendicular to string धरो एटा बाहरला 9 into 10 to the power 9 q रो स्क्वायर 4 into 10 to the power minus 14 by distance रो स्क्वायर तांको भीतर 5 cm तो 5 रो स्क्वायर 25 10 to the minus 4 हैला so this is the force the question is you have to find out the force along this line and perpendicular to this line clear इटे देखो जेहेतु मास समान अच्छी एंगल
tan theta can be calculated. तो एटा थीटा हेले এটা 90 ডিগ্রি, this is এটা থিটা আসিব। হব কেমতি এটা লাইন টা টাণ, এইটু লাইন টা টাণ, এটা থিটা হলে এটা থিটা হব, তাহলে এটা 90 মাইনাস থিটা হব, তো এটা থিটা হব। বুঝিপারছ? তাহলে মতে যে রেড কলর যে দুইটি ফোর্স আছে তাকে বাহার করিয়ার আছে ହେଲା। তো গোটে ফোর্স ହେଲା এইটি ହେଲା Fe cos theta ଆଉ ଏଠି ହେଲା Fe sin theta। ବୁଝାଉଛି? ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି। ତ Fe ର ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଦିଅ। ये ହେଇଗଲା 36/25 ଏତିକି ହେଲା। ତ ତାକୁ ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦବା କେତେ ଆସିବ 18/125। तो आई नीड Fe cos theta। तो फास्ट थीटा देखिबा, tan theta आइदर Fe by mg करि परिबो हैला, tan theta इक्वल टू Fe by mg करा सरछि। तो Fe रो वैल्यू हला 18/250 mg, मास केते 0.1 kg, तो 1। तो this value is very small, you can see this angle is very small, sorry 125 नहीं, এটা Fe value mg टा 1। तो देखि पारो this value is very small, so now cos theta is almost 1 कहि परिबो, as theta is very small, तो cos theta approximately 1 कहि परिबो, आ sin theta is equal to theta कहि परिबो, equal to tan theta हैला। तो L लेंथ दे दीची, एटा तमरो 0.5, तो tan थीटा भी सही हिसाब रे ऑलमोस्ट एटा को तुम यूज करि परिबो। तो लिखिबा बे तले Fe cos theta is almost equal to Fe, that is 18/125 Newton, almost, and Fe sin theta 18/125 Newton रो स्क्वायर पाखा आसीबो, कारण tan थीटा भी से हैला। तो एटा कैलकुलेट कर दियो केते आछी देखिबा, 18/125 এটা কোন বাহারला हो एनी। तो 18/125 जो देखिबा हमें 18 divided by 125 0.144 एटा पाखा पाखी आसीगला 0.144 न्यूटन।
एटा तार स्क्वायर एटा आसीगला 0.02 हैला पूरा कैलकुलेशन करियो लास्ट नेशनल पूरा कैलकुलेशन करियो आंसर एग्जैक्टली नले पाखापाखि तुमर बाहरिबो कोन भाई जी रे किए 1 नहीं थाई पारे 10 नहीं थाई पारे कि 9.8 यूज कर थाई पारे है ना तो এটা 0.144 तापर देखिया कोन अछि तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T equal to नेक्स्ट क्वेश्चन T equal to कहता है F और mg दीटा फोर्स F रो स्क्वायर प्लस mg रो स्क्वायर रो स्क्वायर रूट तो F 0.144 रो स्क्वायर mg हला 1 हला कैलकुलेशन कर दियो मीटर प्लस 1 कर दियो यार स्क्वायर हला तापरे आउट अछि कोन डी रे द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल answer at instant just after the release ओडा इक्विलिब्रियम नाही ना टिके रो क्वेश्चन टा इक्विलिब्रियम नाही जस्ट रिलीज कला परे कोन होइछे कहूची नहीं कि तो नेट फोर्स थियो बैलेंस थोड़ी अछि एटा टिके रो आंसर टा पाखा भी बाहर लागे तो भूल होई जिवो एटा इक्विलिब्रियम नाही सॉरी एटा इक्विलिब्रियम नाही एतो ठीक अछि एटा ठीक अछि ए तापर क्वेश्चन आउट देखिबा द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट तो ये कौन कौन फोर्स पड़ुची या पर देखिबा आगो हैला ये ब्लॉक टा ऊपर कौन कौन फोर्स पड़ुची याडे एफ याडे एमजी याडे टेंशन हैला तो रिजल्टेंट फोर्स हम देखियार अछि द कंपोनेंट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग मैं फिर हम बाहर कर देथिले सॉरी तो ए इंस्टेंट रे एठी जहां भी थीटा थिबो याडे थिबो तो मते दरकार अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग तल तमे कंपोनेंट रे से डायरेक्शन ने नियो हैला कंपोनेंट्स को से डायरेक्शन रखो बोलो क्वेश्चन टा इन मैकेनिक्स भी गोटे साथ एका साथ होउछ तो तमे गोटे डायरेक्शन एटा नियो आ गोटे डायरेक्शन याको परपेंडिकुलर नियो तो ए इंस्टेंट रे एटा थीटा हेले एटा थीटा हबो कि नहीं तले याडे रहिबो
एफी रो cos थीटा आ ए डायरेक्शन रे रहिबो एफी रो sin थीटा सिमिलरली एटा थीटा हेले एटा थीटा हबो ए डायरेक्शन रे रहिबो mg रो cos थीटा ए डायरेक्शन रे रहिबो mg रो sin थीटा बुझ परला तल देखो एफ cos थीटा एफ वैल्यू ठीक अछि वर्तमान along the string कोड तो जीवार नहीं along the string net force 0 net force resultant force is 0 clear then perpendicular to the string এটা বাহির গলা perpendicular to the string fe cos theta minus mg sin theta बुझला तो ये देखो थीटा टी जो बाहर करबा ए लेंथ ता देछि 50 सेंटीमीटर आ एठी जो सेपरेशन रे थिला 5 सेंटीमीटर तो एटा जो 2.5 सेंटीमीटर ए लेंथ ता बुझ परछो ये जो लेंथ ता एठ हो जाए केते हबो 2.5 सेंटीमीटर तो एट भी थीटा देखो स्मॉल एठी जतल देखुछ थीटा इज वेरी स्मॉल 2.5 पेला को एट लेंथ ता बहुत हलानी 20 टाइम्स अधिका हलानी हैला तो एठी भी ताहले थीटा इज इक्वल टू तमे यूज करि परिबो tan थीटा कांसेप्ट और sin थीटा थीटा इज वेरी स्मॉल बुझला देखो बे वैल्यूटा लिखि दियो दिस इज इक्वल टू 2.5 divided by 50 तो 1/20 है cos थीटा 1 तो लिखवा एफ रो वैल्यू 0.144 cos theta 1 mg 0.1 into g 1 sin theta 1/20 है so this is equal to माइनस कर दियो 0.05 minus 0.144 0.094 न्यूटन बुझ पारल बुझेला कौन भाई जो इंस्टेंट रिलीज कराई जेडी इक्विलिब्रियम हो बोली क्वेश्चन किछ कहिन ना रहला तापर क्वेश्चन क्षेत्र कोन अछि द टेंशन इन द स्ट्रिंग कर परिबो Fe sin theta is the tension. Fe tension in the string. Next question. It first question. B tension equal to Fe sin theta plus mg cos theta. Fe sin theta plus mg cos theta. Fe 0.144
144, sin theta is 1 by 20, this is mg1 ହେଲା, theta ତ 1 ନା, theta କେତେ ଆସିବ ଦେଖିଲ, ତ 1 point something ପାଖାପାଖି ଆସିବ ନା କି, 0.144 divided by 20 plus 0.144 divided by 20, 0 ये है +1, तो ये नियरली 1.0072, जदि आंसर दिया है 0.986 ना केते देइछि कोन पाना से जी टा यूज कर 9.8 हैला। सी रे पचारि नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंशन हो गला, कंपोनेंट्स हो गला, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गला, और डी रे डी एक्सेलरेशन बाय मास कर दबो, देखो नेट फोर्स तो ई डायरेक्शन रे रहला, एफ ई cos थीटा माइनस एम जी sin थीटा, बुझियो नहीं, आ अलोंग द स्ट्रिंग तो किछि नहीं, नेट फोर्स 0, तो एफ ई cos थीटा माइनस एम जी sin थीटा, तो एक्सेलरेशन 0.094 न्यूटन बाय मास कर देले सरला, मास इज 0.1, तो 0.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैला। तो एटा देखो केथरा मेकानिक्स भी होउछ, सेति पय मु कहे बही करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझ पालो, तो क्वेश्चन को ठीक रे बुझिबो, नहले जो मिस्टेक करथिले सेटा पुनी हबो, क्वेश्चन क्लियरली पढिबो तापर करिवो। नेक्स्ट, two identical pith balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. Separation between the suspension point being 5 cm. In equilibrium, the separation between the ball is 3 cm. Find the mass of each ball and tension in the string. The charge on each ball दे दीजिए। चलो देखो कौन कौन दीजिए। तो डायग्राम टा बुझ पारलो केमती हेतिबो। क्वेश्चन को भलो पढ़, गोटे रड रु दीटी बॉल को झुला हिच, they are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm. Separation between the suspension point is 5 cm. एठो गोटे स्ट्रिंग झुलची, एठो गोटे स्ट्रिंग झुलची, separation between these 2 points are 5 cm. तो rubbing against each other, rubbing against each other माने गोटे पॉजिटिव चार्ज थिले गोटे नेगेटिव चार्ज थिबो, सो दुईटांग स्ट्रिंग एमदी टाणी हिकी रहउथु कि नहीं। एमदी हिकी थिले, बुझला। तो गोटाकरे पॉजिटिव क्यू थिले, गोटाकरे नेगेटिव क्यू थिबो, तो यांको भीतर सेपरेशन लेंथ 20 सेंटीमीटर, the separation between the suspension point being 5 centimeter. In equilibrium, separation between the ball is 3 centimeter. Eta 3 centimeter separation. Charge dita दे दीजिए 2 into 10 to minus 3 coulomb. Find the mass of each ball and tension in the string. ताले m बाहर करियार अछि और स्ट्रिंग रे टेंशन बाहर करियार अछि। एति हला क्वेश्चन। Solve it.
देखिए 2 मिनट ट्राई करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक टा ही टिके भलो करिया पय पड़िबो, पोटेंशियल कैपेसिटर जाए भलो करिया पय पड़िबो। कोन भाई इडरे ही बेसिक कांसेप्ट था। तुमको किछटा क्वेश्चन देथिली कलो कि नहीं रे सेटा बैलेंसिंग टा सेटा हम करे देबी। हैला हाथ टी क्विक चलो एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो एग्जैक्ट न नहीं। तो कौन कौन फोर्स पड़े गोटे बॉडी ऊपर देखिबा। याडे थिबो अट्रैक्टिव फोर्स एफ ई, इडी टेंशन थिबो टी आ एम जी, ये तो एतिक रे से इक्विलिब्रियम रे अछि कि नहीं। तो एंगल एटा जे थीटा तो लिखि परिबा इक्विलिब्रियम रे कोन लगेबी लामिस थ्योरम तीनटा फोर्स नॉन पैरेलल कनकरेंट फोर्स। तो एफ ई बाई साइन एफ रो सामना रे एंगल टी केता हो 180 माइनस थीटा हैला टी बाई साइन 90 एम जी बाई साइन 90 प्लस थीटा। बुझुछ तो बर्तमान एफ टा बाहर करिया। सस्पेंशन पॉइंट भीतर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एटा 3 सेंटीमीटर तले एटा हबो 1 सेंटीमीटर एटा भी हबो 1 सेंटीमीटर हैला। आउ ए लेंथ ता देछि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स 20 तो बहुत बड़ तो थीटा स्मॉल एठी भी गला थीटा एठी स्मॉल देखि पारछो। So you can write sin theta is equal to tan theta is equal to 1 by 20 0.05 ହେଲା आ cos theta ର value 1 हबो। तो एठी जहा जहा पछा जेब कर परिबो एफ रो वैल्यू आ गोटे लिखि दो एफ 9 into 10 to the 9 चार्ज रो स्क्वायर 4 into 10 to the 9 minus 9 by distance रो स्क्वायर 9 into 10 to the minus 4 हैला 9 9 कैंसिल 10 to the 9 10 to the minus 9 तो 4 into 10 to the power 4 न्यूटन रो फोर्स। तो टेंशन पचारि तो टेंशन इज इक्वल टू एफ ई बाई साइन थीटा हैला। तो एफ रो वैल्यू होला 4 into 10 to the 4 साइन थीटा होला 1 by 20 तो 8 into 80 10 to 5 हैला। ठीक है कैलकुलेशन टी देखि देलो
कैलकुलेशन ठीक है कोड भूल भाल करनी तो चार्जटा केते देछि कि आउथर पढिदेलो क्वेश्चन रे एते गुडा डाटा बाहरिया कथा न तो से कहूछ 2 into 10 -8 कूलम लिखा है एटा हो कैलकुलेशन टिके करो तो 2 मिनिट कैलकुलेशन करेक्ट करो আসলে ঠিক আছে हाँ एभला काउंट बाहर डाटाटा भूल लिखि देथिले हला এটা -8 ଦେଇଛି ତାହେଲେ जो केते 4 into 10 माइनस এটা जो 16 नन कटिला 13 -3 एटा आसीबो नै कि तार एटा -3 20 तो -2 हैला ताले टी बाहर गला एमजी बाहर कर परिबो बे हैला टी इज इक्वल टू एटा देखि पारुछो mg by cos theta तो ऑलमोस्ट mg आ cos theta तो 1 तो mg रो वैल्यू t बाहर गला ये ऑलमोस्ट एतिक हो हैला तो मास बाहर कर परिबो t by g कर देले तो m इक्वल टू t by g तो 8 into 10 to minus 2 by 10 कर दे हैला एति केजी जा बाहर 0.008 केजी तो पाखापाखि 8 ग्राम हैला नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू दीटा गोटे पॉइंट रोज and identically charged and the separation between the ball at equilibrium is found to be this find the charge on each sphere करी हबो तो देखो ए ऊपर गोटे क्वेश्चन केमती तुमरा आस्थिला
there are two charges Q and Q, mass are also same. Distance string is L, so theta, this is also theta, and the separation between these two is x, that is very less than your L. That कहबार meaning है theta small. Charges are leaking, लिखा है क्वेश्चन रे, जेरी भी आछे नीट रे भी आछे. Charges are leaking at a constant rate. So that the spheres approaches to each other. Approach towards each other. With a relative speed v. Okay, then v and x the relation बाहर कर रहा तो n is equal to what? है तो बर्तमान देखिबा या पर कौन फोर्सेस लागुच ये चार्जेस जेहेतु धीरे धीरे कमी जाउची चार्जेस जेहेतु धीरे धीरे कमी जाउची या भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा कमी जाउतो सेदि पय सने अप्रोच करछंती एमजी रे कि चेंजेस हो नथो कि नहीं तो या पर गोटे फोर्स याडे थिबो एफई याडे थिबो एमजी गोटे थिबो टेंशन एट एन इंस्टेंट तीनटी फोर्स काम करथो बुझेला सब जानि छे एट एन इंस्टेंट tan थीटा यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहूची धीरे धीरे इक्विलिब्रियम हे जाउथो तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय mg तो tan थीटा ट्रायंगल रू देखो लिखिबी x by 2 l almost fe constant q रो स्क्वायर by तांको भी डिस्टेंस x स्क्वायर mg हला तो देखो x क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर है गला हला तो एटा गोटे रिलेशन बाहरला तो एठु लिखि परिबो जने x is equal to x is proportional to q by 2 by 3 है और q is directly proportional to x to the power 3 by 2 तुमको जोड़ा ठीक लागुछ दुईटा रही परियो किछ असुविधा तो डेरिवेटिव कर with respect to time तो dx by dt is directly proportional to 2 by 3 q to the power minus n into x to the power n minus 1 2 by 3 minus 1 dq by dt जन लिखि परिबो और एठु यदि लिखिबी dq by dt directly proportional to 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1 dx by dt देखो दीटा कौन मिलुछ मते तो v is directly proportional to क्वेश्चन में कौन लिखा है लीकिंग एट कांस्टेंट रेट
यार मीनिंग कौन dq by dt is रेट जो देथियो ऑन टाइम इज कांस्टेंट हैला। तो जो एक्सप्रेशन गुडी को अछि ये गोटे कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो q टू द पावर -1/3 अब इठु देखो एटा कांस्टेंट ताले ए दी जन दिस इनटू दिस आल्सो कांस्टेंट हैला। ताले मु कहि परिबी वेलोसिटी dx by dt वेलोसिटी x टू द पावर हाफ माइनस हाफ ना सॉरी हाफ सॉरी v into x to the power half is constant बुझ पारलो। तो v x to the power minus half से तो प्रोपोर्शनल हो तो n ର वैल्यू माइनस हाफ एपटे करले जल्दी जाउछ एठी भी परिबो। देखो कोन करिवो मते दरकार x सहित रिलेशन तो q टा देखो q is proportional to x to the power 3/2 तो q is proportional to x to the power 3/2 माने q जगह लिखिबी x to the power 3/2 minus 1/3 तो सही 3 कैंसिल बुझला। तो एटार देखो जल्दी हो जाउछ काहे पुनी थरे रिप्लेस करिवो गोटे थरे बाहर। तो जेई रे कोन क्वेश्चन आस्थिला पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन आस्थिला नीट रे तमरो ई प्रोपोर्शनलिटी ऊपर आस्थिला बुझौछि सेतमा कोइ भलो क्वेश्चन करो आ 12th रे ही भलो क्वेश्चन 12th रो क्वेश्चन ही भलो आसीबो यूजुअली कंसीडर मैकेनिक्स टा इंक्लूड करी कर दो से। नेक्स्ट 25 similar problem a particle have 26 particle having a charge this is placed directly below at a separation देखो 26 a particle having a charge this is placed directly below and at a certain tension from the bob of a simple pendulum at rest सिंपल पेंडुलम माने मास टी बहुत छोट होइतिबो पॉइंट मास भाबी दो रेस्ट रे अछि तो भला थिबो जस्ट डायरेक्टली बिलो या तळे आउटे बोल रखा है केते 10 सेंटीमीटर from the bob of a simple pendulum at a rest the mass of the bob is 100 gram यार मास दीछे 100 ग्राम what charge should be the bob be given so that a string becomes loose यार चार्ज दीछी 2 into यार चार्ज q1 2 into 10 to the power -4 कूलम यार चार्ज केते हबो so that string will lose string lose होवर मीनिंग कोन हबा दरकार यस स्ट्रिंग लूज हो माने कोन हले लूज हो लूज हो माने कोन स्ट्रिंग लूज तर मीनिंग कोन एनीवन 10 नहीं t इक्वल टू mg हेले लूज किमती हला गोटे रस्सी रे लूज हे गला t कोड आसीबो t 0 होबो लूज होबार अर्थ हैला रस्सी रा टेंशन नथिबो t 0 ही जीवो तार तो किमती 0 होबो देखो एबे कर दे परिबो
जदि टेंशन 0 होबार अछि एठी तो इक्विलिब्रियम थिला t इक्वल टू mg थिला जेतबेले इक्विलिब्रियम थिला t इक्वल टू mg थिला कि नहीं दैट मींस ये जो याकू गोटे फोर्स लगेइबो जस्ट तार अपोजिट लगाले जाई हो कि नहीं याकू जदि याडू गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलिबो आ गोटे टेंशन थिला रस्सी रे आगुरु आ गोटे रस्सी रे टेंशन थिला आगुरु एटा टेंशन एमती थिला एट इक्विलिब्रियम t इक्वल टू mg होतला लूज हो गलान t टा को 0 करियार अछि बुझिले नहीं लूज होला माने t टा को 0 करियार अछि एटा इक्विलिब्रियम थिला तो मिनिमम केते फोर्स चार्ज दे देले से टेंशन टा 0 हो जिवो mg को बैलेंस करले गोटे फोर्स दे देले हो जिवो तो जदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mg हे गला हैला देन t बिकम 0 तापर तो बाहर कर परबो को q1 देछि q2 बाहर करियार अछि सेपरेशन दिया हिची मास दिया हिची हैला नहीं नहीं mg माइनस हो कहीं करिवो t टा 0 ही जिवो जस्ट f को बैलेंस कला mg को बैलेंस कला भलिया गोटे तोर दरकार এই বডিটি এটা গোটে বডি यार मास mg अछि तू ताको एक्जेक्टली यदि याडे गोटे फोर्स देबू सेठी बैलेंस ही रहिला नहीं ताले एटे रस्सी लगाओ न लगाओ किछि फरक पड़िबो कि बुझ पालो अरे बुझ पालो ना mg माइनस f कर दबु mg इक्वल टू f करियार अछि t तो 0 करियार अछि हो आ f रो वैल्यू रे गोटे चार्ज नाही सेटा को फाइंड आउट करियार अछि सबुडा बाहर करियो गोटे खाता करियो सब लिखिबो निजे निजे सॉल्व करि चलिबो हैला the two particles evenly having charge q and 2q respectively are placed on a smooth table with a separate d a third particle c is to be clamped on the table in such a way that particle ab remains at rest on the table under the electrostatic force what should be the charge करा हिच इक्विलिब्रियम हैला आ गोटे तुम क्वेश्चन देथिली स्क्वायर वाला भी गोटे क्वेश्चन देथिली एठी q थिला एठी q थिला एठी q थिला एठी q थिला या ऊपर आगो नेट फोर्स बाहर कर दबो सिस्टम इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन देथिली तो याडे फोर्स ये याडे फोर्स दबो आ ये याडे गोटे फोर्स दबो ए तीन जण जाकर इक्विलिब्रियम फोर्स एटा एफ एटा हला एफ इक्वल टू k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर एटार वैल्यू से f इक्वल टू k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर और ए जो फोर्स टी देखो f डैश जो फोर्स टी हबो एठो इतो सेपरेशन एटा √2 है तो k q स्क्वायर 2a स्क्वायर तो यहाँ पर जो नेट फोर्स पड़ुछ √2f प्लस f डैश √2 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर f डैश k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर डेल नेट फोर्स तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर यदि कॉमन गला √2 1/2 जदि एई फोर्स को बैलेंस कला भले फोर्स टी तुमको मिलिबो एटा मझे रखिथिले आउटे चार्ज तो याडे जदि सेतिकी फोर्स से लगे दो मोर काम होई जिवो तो ये अट्रैक्टिव माने याको तो पक्का नेगेटिव तो आगा होबा पई पड़िबो नले अट्रैक्ट करियो केमती हैला आ ए फोर्स टा सेतिकी होबा दरकार सो से फर्स्ट रेड वाला फोर्स टी केता होबा दरकार k q q एटो तो डिस्टेंस हला a √2 कि नहीं √2 एर अधा a √2 रो स्क्वायर that must be equal to this force ताल तुम एबे लिखि परिबो जदि सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम करा ही छै क्वेश्चन सो
देखियो प्रीवियस स्लाइड के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 1/2 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर 2। तो के क्यू ए स्क्वायर तो क्यू इज इक्वल टू पूरा जो लिखी माइनस साइन देवी क्यू बाई 2 √2 1/2। तो बाहर को 2 कॉमन पड़े आसिले माइनस क्यू बाई 4 2 √2 प्लस 1 है এটা ছিল তার आंसर। তারপর দেখা নেক্সট क्वेश्चन এসি वर्मा रिचार्ज वाला तो 26 ताहले 27 भी ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା क्वेश्चन करा सरिछि निजे करिवो नहले मते पचारिवो 28 two identical charge particles are fastened to the two ends of a spring constant 100 newton per meter natural length तार एतिकी the system rests on a smooth horizontal table if the charge on the each particle is this much find the extension in the length of the spring assume that extension is small as compared to the natural length justify this assumption after you solve the problem। तो देखो जदि एक्सटेंशन टा बहुत बड़ हो जिवो जदि एक्सटेंशन टा बहुत बड़ हो जिवो स्प्रिंग रे सेट नेचुरल डिफॉर्मेशन पळे आसीबो आ f इक्वल टू kx वाला फार्मूला लगै परिबो नाही हैला पूरा कम माने परमानेंट डिफॉर्मेशन पळे आसीबो सेते। तो सेति में जो लास्ट लाइन टा लिखाई जस्टिफाइज दिस assumption आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो तार काम होला सेति। तो बाकीटा कोन देछि देखो एटा स्प्रिंग एटा तार नेचुरल लेंथ। तो जते बेले एठी चार्ज समान दिया हिच तो वर्तमान एटा टिके एमती एक्सपैंड कर दियो। तो यांक भीतर गोटे सेपरेशन तो याडे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये भीतर स्प्रिंग फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रे कौन से गोटे बड़ी कथा भाव ये बड़ी कथा भाव जस्ट थिंक या पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याडे जेतु स्प्रिंग टा एक्सपैंड करछि से टाणुथबो याडे स्प्रिंग फोर्स कि नहीं। तो F इक्वल टू जस्ट FSP स्प्रिंग फोर्स। कौन डाटा दी देखि दियो two identical charge particles are fastened to the two ends of a spring कौन था k दे देला नेचुरल लेंथ दे देला हैला। तो k x रे x टा एक्सपेंशन द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल फ्रिक्शन नाही ये तो चार्ज q दे देला हैला। तो कौन देछि देखो यार q दे देला तो k q स्क्वायर बाय टोटल लेंथ टा भरो x स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स केते लिखा हबो एनीवन तो मित्र को ता एक्सप्रेशन केते लिखिबी k इनटू केते लिखिबी स्प्रिंग फोर्स k इनटू जल्दी 30 जाए करिया तमे आज 48 जाए सार दबो 50 जाए तो छुट्टी थी ना कि नहीं स्कूल छुट्टी x हबनी समर्पिता x माइनस l सही समान ठीक एक्सपांशन लिखा हुए लेंथ लिखा हुए नहीं आगरु l नॉट थिला एबे x लेंथ अछि तो एक्सपांशन केते हला x माइनस l नॉट। तो खाली एठी x जणा नहीं हला l नॉट देछि क्वेश्चन देखि दियो भलो
तो 2 पार्टिकल ए बी 28 के दे देछि नेचुरल लेंथ एल नॉट देछि चार दिटा को दिया हिच बुझला तो फाइंड द एक्सटेंशन माने x बाहर करिवो पुणी x माइनस एल नॉट बाहर करिवो तुम काम सॉल्व निजे करिवो 50 तो कहि सारिवो मु 30 तो डिस्कस करूछि हैला बुझेला ना सॉल्यूशन तमे करिवो कैलकुलेशन सब थोड़ी करिवो सब कैलकुलेशन करले टाइम हबो ना नेक्स्ट 28 गला 29 particle A having a charge this much are held fixed on a horizontal table. Second charge particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second table is this much. Find 29. In a table, particle A having a charge this much is held fixed. Charge A को fix करी रखा है हाँ ये को fix करी रखा है नीचे 2 into 10 to minus 6 coulomb. The second charge particle of mass, their mass is 80 gram. At a distance of 10 centimeter. From the first charge. The coefficient mu is 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. केतरु केते भीतर ही परियो रेंज पचारि चार्ज खाली पचार दे माने कौन देखो म्यू इंटू एन एन तो एम जी एटा दीटी केस हे परियो आइदर माने या ऊपर जेतेबेले जाए म्यू एम जी रो फोर्स न पड़ी सेतेबेले से डिस्प्लेस होबार चांस नाही आउडी फोर्स इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर बुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हो पारिबो रिपल्सन भी हो पारिबो तो प्लस चार्ज नहीं कि माइनस चार्ज भितरे माने फर्स्ट केस जदी करूची केस 1 तो रेंज कहिची क्वेश्चन को भली बुझिबो तो ये तो प्लस चार्ज 80 प्लस चार्ज होउची हला तले या ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यार पड़िबो तो फ्रिक्शन था को लिमिटिंग कंडीशन रे थिले लिमिटिंग भितरे रखि परिबो सेकंड केस जदि नेगेटिव चार्ज हला या अट्रैक्ट करियो हला तो जोड़ा आंसर प्लस इधर बाहरी आंसर प्लस क्यू एठी बाहरी माइनस क्यू एटा रेंज माइनस क्यू रु प्लस क्यू भीतर किसी भी दे परिबो बुझ पलो नहीं रेंज पचारि तो क्वेश्चन मीनिंग टा बुझ खाली आंसर बाहर कर थोड़ी हो बुझला तो हबो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जीरो
Particle A having a charge this much and a mass this much is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination theta. Where should another particle B having the same charge and mass be placed on the incline so that it may remain equilibrium? देखिए तो गोटे inclined plane अछि according to question तार किस एंगल देछि थीटा चार्ज देछि मास देछि is placed at the bottom of a smooth inclined plane ए गोटे चार्ज टी रखा छि बॉटम रे Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline? एटा A एटा B कोठे रखिबा बैलेंस कर हैला ताले या ऊपर कोन कोन फोर्सेस देखि एटी तर A एटी तर B तर mg एटे थिबो नॉर्मल एमती थिबो आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एटा पड़थो ए तीन जण बैलेंस हेले जाई परियो तो 3 नॉन पैरेलल कंकरेंट फोर्स कोन लगे दबा लेमिस थ्योरम जल्दी सॉल्व करी हबो क्लियर तो पार्टिकल ए रो चार्ज दे दीछि यार मास देती चार्ज दे दीछि चार्ज दीछि 2 into 10 to minus 6 coulomb your mass 100 gram सेम चार्ज सेम मास हां एटा आउट फोर्स भी अछि कोन ग्रेविटेशनल फोर्स यांको भीतर थिबो हालाकि एटा बहुत नेग्लिजिबल थिबो यार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स भी थिबो एटा भी तो अछि ना हालाकि Fg रो वैल्यूटा वेरी वेरी स्मॉलर देन तो नेट F रखियो कोन पाई g रो वैल्यू 6.67 10 minus 11 आसीबो किंतु F लेखला वाला कांस्टेंट 9 into 10 to 9 आसी जतो हां करि हबो सेइदर तो बाहरला ना एंगल तर थीटा तो n n by sin 90 plus theta mg by sin 90 जदि एफ को धरुची खाली एफ को धरुनी एफ by sin 180 minus theta सॉरी mg by sin 90 नहीं सॉरी बुझला देखो ताले होनी कि f equal to mg sin theta दुईटा पचार sin 90 हे गला ये sin theta f equal to mg sin theta हैला ताले ठी कोन कोन बाहर करियर अछि कहिछि डिस्टेंस टा तो f हे जबो कोन तो f equal to mg sin theta हैला तो f जगह रे k q तो दे दै छि जणांकर डिस्टेंस रो स्क्वायर mg sin 30 देखियो कैलकुलेट करी बुझला ताजी एति की तो काली क्लास हबो 11th पाठ टिके आ तुम एटा 50 जाय कंप्लीट करो ले 48 49 50
50 जाए कंप्लीट करो। आज एति ओके क्लास अच्छे जी स्कूल रे ओके हो भाई छुट्टी थी बोध राम नवमी ना हो ठीक अच्छे।